You're watching Newstainment Television. Sandeep, please come over here. Thank you for bringing this up. Thank you for being so beautiful the way you are. Thank you for bringing this subject. What, when you were doing Safed, how did this concept came in your mind, and why, you wanted to do a subject which was such a high risk subject in the society? I have told this past in my interviews that actually I do still consider myself a newcomer in the industry, because my father is not somebody who belongs to the industry, or even my mother. So when I thought of making a film, I was very sure nobody will give me a high budgeted film. No big A-listers will work with me. So it's very important to realize who you are. And that's what this film, Safed, is all about, who they are. That's what we have to realize. So I thought of this film, and I knew that the subject itself is a star of this film. So I needed a good actor who can portray these characters to the audience in a very easy manner. So when I wrote this film, it was around 70 to 80 pages, and post that I made it to 30 pages. And when I narrated this film to a lot of people, they all, with all their love and as a friend, rejected this film, and nobody wanted to fund this film, and apart from that, nobody wanted to act in this film. So I'm really grateful to people like Abhay and Meera and and Jamil Kai and Barkha. They all supported me, and but obvious Samir and a lot of other people, Rahul, I took your name, darling, and Mansi, Tarun, yeah. They all came together, and let me tell you, everybody worked in this film without any money. That was very important. That's quite sweet of them. Yes. That was very important. And I especially want to, and I especially want to thank today people who have actually understood, and they have come to cover this, because this is the first press conference where I see very very limited media. But trust me, मैं दिल से बोल रहा हूँ ये बात कि जो लोग आए हैं वो लोग इस चीज़ को इतनी इज्जत दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद. Thank you so much, and I'll always remember these faces who have come from the media, and I will always be grateful to this 5 people who are here. And Shilpi, I'm grateful to you because you are you do a very very sincere and great effort for each and everything you do. Thank you for making Safed and reach where it is. Thank you. Thank you very much. That was very beautifully said. But before I call this woman in front of you, I think, more than the cast of the movie plays a very important role. Look, a director can write, and you can have a producer, you can direct, you can write. But if the kirdar is not very, if they cannot do the kirdar properly, then the whole movie goes to the... So I think this woman, before I call on the stage, I see her eyes talks everything. Yeah, Her opening scene, when I was watching this documentary, and he sent me a link. The first shot of Kali Ma, and when she's wearing a white sari, or your first shot for a movie, I think it was very heart touching. I could relate to her emotions. I think she's a fab job. I think, the whole expressions and everything what she delivered, I think is beyond expectation. So without wasting any time, I will call Meera Chopra over here, the most gorgeous, very ambitious, and a very, very beautiful and talented actress. Thank you so much. Darling, tell me one thing, when this Sandeep offered you this movie, which was not, because a lot of people want your commercial movies. They want you to do a commercial movie which is a very high budgeted, and the kind of background you come from, and obviously you must be having a restriction. When you were reading the script, what was going on, and how could you relate? Did you do the research on this? Did you do your homework? You did your workshop? Then how were you so perfect and talent on this movie? मैं इस क्वेश्चन का आंसर 5 मिनट बाद दूंगी.
Right now I'm in a very different mood because we just did an interview 5 minutes back और सलमा ने ना एक बात बोली जो मैं अभी तक I'm not able to get over that I understand. कि हम लोग अधूरे हैं और जब कोई इंसान एक ऐसा वर्ड बोल देता है कि we are incomplete, I feel this is just so wrong because हम सबको भगवान ने पैदा किया है, हम सबको उन्होंने ज़िंदगी दी है और किसी को भी ये सोचना नहीं चाहिए कि they are incomplete and they are अधूरा. We all are complete in our own sense. So nobody should even think that कि वो लोग अधूरे पैदा हुए हैं. But I can understand when Salma and when everybody of them they think that they are incomplete because हम लोगों ने उनको ऐसा feel कराया. मैं off topic चली हूँ 2 मिनट के लिए. हाँ मतलब मैं यहाँ डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ. हाँ 3-4 दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ था जिससे हमारी पूरी सफ़ेद की टीम बहुत अफेक्ट हुई थी. पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक जज ने एक सेम सेक्स की पेटिशन को उठा के फेंक दिया था और बोला था कि मैं ये इमोरल चीज़ें सुनने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ. और हम सब ने उसके बारे में ट्वीट किया था और जब मैंने ट्वीट किया था तो मेरे को ना कुछ कमेंट्स आए थे एंड दोज कमेंट्स हैड वर्ड्स लाइक faggots, मीठा, गुड़, छक्का और you know normal meaning. So you know we have become so insensitive and so बदतमीज to give words like these to certain section of society. आप लोगों ने क्या हमें कोई words दिए हैं ऐसे? No. आप लोगों ने हमें No. इन लोगों के अंदर कितना गुस्सा होना चाहिए क्योंकि हम उनको यूजुअली इन शब्दों से बुलाते हैं. But they have not given us any such words. So यहीं पे क्लियर हो जाता है कि these people are such beautiful soul. और फिर हम बात करते हैं नॉर्मल की कि ये लोग नॉर्मल नहीं है. नॉर्मल कौन है? हम लोग नॉर्मल है. मैं कितने नॉर्मल लोगों को देखती हूँ जो 2-3 शादियाँ कर लेते और तब भी खुश नहीं रहते. मैं कितने नॉर्मल लोगों को देखती हूँ जो अपने माँ बाप को छोड़ के उनका मुँह नहीं देखते. मैं कितने नॉर्मल लोगों को देखती हूँ जो सारी रात ड्रग पार्टी करते हैं और सारा दिन सोते हैं. वो लोग नॉर्मल है. सो मेरे को इस टाइम थोड़ा गुस्सा आया हुआ है कि हाउ हैव वी लेट दिस हैपन दैट अ सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज लिविंग लाइक दैट. और सफेद इज जस्ट एन एफर्ट टू मेक देम फील वांटेड, टू मेक देम फील इक्वल एंड टू मेक देम फील कंफर्टेबल एंड लव्ड दैट दे आर आल्सो लाइक अस, दे आर अस. सो ये जो इनडिफरेंस और इनइक्वालिटी है ना ये सीरियसली खत्म होनी चाहिए. संदीप ने एक एफर्ट लिया है, नहीं लेते लोग. जैसे उन्होंने बोला लोग सपोर्ट ही नहीं करते ऐसी चीज़ों को. बट आई थिंक हाई टाइम हमें करना चाहिए. 21st century everybody should live equally, everybody. But anyways, thank you so much. आप लोगों को देख के इतनी खुशी मिल रही है कि ये सफ़ेद जो है जो हमारा था वो लोगों तक पहुंच रहा है. एंड थैंक यू सो मच रोहित सर फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्पायरिंग अस विद योर स्टोरी. एंड आई थिंक जो लोग मेरे लेफ्ट में बैठे हैं, आई एम सॉरी टू द राइट वंस, बट जो लेफ्ट में बैठे हैं आई थिंक दे आर द मोस्ट करेजियस पीपल आई हैव एवर सीन. और रोज़ निकलना अपना सर उठा के और दुनिया से लड़ते हुए आई थिंक वो काबिल तारीफ बात है. तो एक बार खुद के लिए आप ज़रूर सुबह उठ के तालियां बजाया कीजिए कि हाँ यू आर ब्रिंगिंग द चेंज और आप एक चेंज का हिस्सा हैं. और साथ ही साथ अब मैं भी हूँ. और दिस ब्रिंग्स मी टू वेरी कॉमन क्वेश्चन जो लोग मुझसे पूछते हैं कि हाँ भाई क्यों सफ़ेद, मतलब सफ़ेद क्यों? पहला काम और पहली फिल्म. तो ये फिल्म तो हमने देख ही ली है जो ZEE5 पे आ गई है. एंड जो वंडरफुली टैलेंटेड समीर अली माय ब्रदर जो आपने डॉक्यूमेंट्री डायरेक्ट की है वो मेरे क्यों के सारे जवाब दे देता है. बिकॉज अगर आज के टाइम में अगर कोई ये इंसान सोच रहा है दैट दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी एंड दे चूज टू डाई ओवर लिविंग, आई थिंक वी हैव फेल्ड मोर देन एनीवन. एंड एज सर वी वर डिस्कसिंग, सर also said yesterday, I think we are the ones who have murdered them and we should be punished, not them. So that's the mindset and that's the thinking and that's what I live by, to treat everyone equally, which brings me to Salma. Salma, आपके बिना सफ़ेद
सफ़ेद हो ही नहीं सकता था, अगर सफ़ेद हो भी जाता तो मैं चांदी नहीं हो सकता था। तो चांदी जितना आपसे प्यार करता है उतना शायद आप कोई भी नहीं करता होगा, बिकॉज अगर आप ना होते, आपने मेरे साथ वक्त ना बिताया होता। देखिए जब हम मिलते हैं एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो पहली मुलाकात में खुशी की बातें तो सभी बोल देते हैं, लेकिन किसी के साथ, और स्पेशली सलमा जिनकी एक बहुत ही स्टोरी है, बैक स्टोरी है जो कि बहुत ही सॉरी बट सैडनिंग है, जिसको मैं खुशी में ऑफ कोर्स बदलना चाहूँगा, जो मैंने सफ़ेद के थ्रू कोशिश भी की। बट पहली बार मिलने पे खुशी की बात तो सभी कर देते हैं, लेकिन अपनी दुख की बात कोई नहीं शेयर करता है। और वो उन्होंने अपना दिल मेरे लिए खोला, और ऐसा खोला कि मैं खुद ही खुल गया दिल में, और अच्छे से उसको निभा पाया। तो थैंक यू सो मच सलमा। एंड मेरे जो दो अनमोल रतन मेरे राइट पे खड़े हैं, आई थिंक आई एम नथिंग विदाउट यू ऑल। सफ़ेद वॉज नथिंग विदाउट यू ऑल। अगर आप काली नहीं होते, सर आप ना होते, नथिंग, कुछ भी ना होता। एंड बस यही बोलना चाहूँगा एंड में कि ये जो भेदभाव की रीत है ना, वो बहुत पुरानी हो गई है। अब थोड़ा नई रीतों को आगे बढ़ाते हैं और ये पुरानी वाली रीत छोड़ देते हैं, ताकि आगे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सब की, इट्स हाई टाइम टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो निभाते हैं अच्छे से। एंड लेट्स लीव द डिफरेंशिएशन ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे ड्रेस, लेट्स लीव इट बिहाइंड। थैंक यू। This is Newstainment Television. Newstainment Television.